Hello kids, welcome back. Back to your computer classes. So kids, up to now we have completed our chapter paint and now it's our turn to okay. Now it's our turn to start chapter. Okay now. So today we will start our chapter WordPad. So in our last class I have already given you some information about this app. Now today what we will do, today I will give you a quick recall of the things that we have done earlier. Okay, today I will give you a quick recall of the chapter of the topic that we have discussed earlier. Okay, so first thing is that how can we start or open WordPad? How can we start or open WordPad? Now, okay. So you can start the WordPad program by the following steps. First is click on the start button, then click on all programs. What will happen? Then a list of programs appear. From there you have to click on accessories and then you have to click on WordPad. Okay, then you have to click on WordPad. See, first you have to click on start button, then all program, then accessories and then WordPad. This will lead you to WordPad. So let us open WordPad. So I will click on the start button and then I'll search for WordPad. See, this is how I will open the WordPad. WordPad program मैंने इस तरह से open कर लिया. So now you can see WordPad program on your screen. Okay. Okay, great. Now, next is what are the different component of WordPad? What are the different component of WordPad? Okay, so the different component of the WordPad are, first is file tab, then it is home tab, then next is view tab. These all tabs are the different component of the WordPad window. So here, as you can see on your screen, three tabs has been given that we will read later. Now here, next is WordPad window. Now, after you open WordPad, now the moment just you open WordPad, what will happen? You will see that the interface is completely modified in comparison to the previous version. So this I have explained you previously also, that what happened. This I have explained you previously also that पिछले सारे वर्जन से इस बार क्या है, थोड़े से चेंजेस है. फॉर एग्जाम्पल, टूल बार एंड मेनू बार they have been replaced with ribbon and tabs. Tool bar and menu bar has been replaced by ribbon and tabs. Okay, now next is different different component. So first is title bar. So very first is title bar. Now the topmost bar shows the name of the displayed document. So the first thing is title bar. The topmost bar shows the name of the displayed document. तो जो भी document हम open करते हैं, ठीक है, उसका नाम हमें कहाँ दिखता है? सबसे पहले उसका नाम हमें दिखता है टॉप पे, टाइटल बार में हमें उसका नाम दिखता है. ओके, नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. Next thing is quick access toolbar. Now what in quick access toolbar? It displays quick access button for save, undo and redo command. It displays quick access. It displays quick access button for the save, undo and redo command. So if I want to undo or redo any command, what I can do? I have to click on quick access toolbar. Okay. Now next is WordPad button or file tab. WordPad button or file tab.
Now it displays a menu of file commands such as new and open. It displays a menu of file command, that is new and open. Okay. Now next we are having here, so the next thing we are having tabs. Home and view are the two tabs in the WordPad. तो कौन से दो टैब होते हैं WordPad में? फर्स्ट वन इज होम एंड अदर वन इज व्यू. Home and view are the two tabs in the WordPad. Great. Next is ribbon. Now it displays a group of related commands. What it does? Ribbon displays a group of related commands. Acha. Once I will open the WordPad, then I will show you all these things. Okay. Now, next is insertion point. Next thing is insertion point. What in insertion point? It is a flashing line on the screen where you type the text. What is insertion point? It is the flashing line. It is a flashing line on the screen where what we do, where we type the text, where we type the text. So it is what? It is a flashing line on the screen. Now, moving ahead, next we are having entering text. But before moving ahead, let us, I'm going to show you all these options there at your, I'm going to show you all these options on the WordPad. So here see, this is what, this is my WordPad. Let me open it on full screen. Now, see, हमने किसके बारे में बात किया? हमने अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बात किया. अच्छा, सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिबन. तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है कि होम टैब में हमारे पास क्लिप बोर्ड है, देन वी आर हैविंग फॉन्ट, then we are having paragraph, and then we are having insert, and then we are having editing. These options, अब ये देखो ये ऑप्शंस कैसे आए, ये कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन में आए हैं. ठीक है, ये ऑप्शंस कैसे आए हैं? ये ऑप्शंस हमें ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं. तो ये ऑप्शंस अगर हमें ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं, so what does it mean? If these options are available to us in drop down, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज रिबन. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज रिबन. ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ना, इसी को हम कहते हैं रिबन. ओके, नाउ मूविंग अहेड, सी दिस इज व्हाट, this is our home tab and this is our view tab. Two tabs are there, file, home and view. Home and view are two tabs. Now here at the top of your screen, see here जहाँ पे मैम ने अंडर आउटलाइन किया है रेड से. Now this area is what? This area is quick access toolbar. This area is what? This area is quick access toolbar. This area is quick access toolbar. Okay. Now, अच्छा, आफ्टर ऑल दिस थिंग देखो हमने होम टैब पे क्लिक किया तो वी हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस. नाउ इफ आई क्लिक ऑन व्यू, तो देखो व्यू में भी आई एम गेटिंग ऑप्शंस लाइक जूम इन, जूम आउट, 100%, रूलर, स्टेटस. सो सी दिस इज वेरी मच सिमिलर टू एमएस पेंट. एमएस पेंट में भी हमने व्यू ऑप्शन में ये सारी चीजें देखी थी एंड सेम थिंग वी आर सीइंग हियर ऑल्सो, है ना. जूम में हमें ये सारी चीजें, जूम इन जूम आउट में हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं. Okay, great. Now let us move back to our PDF and see what we have to study there. Yeah, so we, acha. Now next is, acha, one thing I have to show you, that is insertion point. One thing that a ma'am has to show you is insertion point. मैम ने आपको क्या दिखाना है भी? इंसर्शन पॉइंट. तो सी
here. Okay, kids. Now, so I was telling you about the insertion. I was going to tell you about the insertion point. So let me open the word once again. Okay, here I have opened WordPad. Now see, here you can see on the screen. आप देख पा रहे हो, देखो. Okay, it has gone now. ओके अच्छा देखो, आपको मैम की स्क्रीन पे ये जो ब्लिंकिंग पॉइंट नजर आ रहा है, देखो मैम का कर्सर जहाँ पे, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्लिंकिंग पॉइंट. नाउ दिस ब्लिंकिंग पॉइंट इज व्हाट, दिस ब्लिंकिंग पॉइंट इज इंसर्शन पॉइंट. इंसर्शन पॉइंट मीन्स वी कैन टाइप अवर टेक्स्ट हियर. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टाइप अवर टेक्स्ट हियर. तो जहाँ पे हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा, देयर ओनली वी हैव टू टाइप द टेक्स्ट. जहाँ पे हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा, वी हैव टू टाइप द थिंग्स देयर ओनली. ओके ना. नाउ entering text, next thing is how to enter text. See, the text can be entered with the help of keyboard. Text can be entered with the help of keyboard. The text you type will appear where the insertion point flashes on your screen. So where text appear, text will, the text, जो भी text हम type करेंगे, where that will appear. Now that will appear at the insertion point of our, that will appear in the insertion point. Insertion point, जहाँ पे हमारा insertion point है, there it will appear. Now what happened, next, sorry, नेक्स्ट इज टाइप द टेक्स्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट. फर्स्ट ऑप्शन है, जहां पे भी इंसर्शन ऑप्शन है वहां पे हम क्या करें, टाइप, हम अपना टेक्स्ट टाइप करें. नाउ व्हेन यू रीच द एंड ऑफ अ लाइन, व्हेनेवर वी विल रीच द एंड ऑफ द लाइन, व्हाट विल हैपन, WordPad automatically send the text to the next line. WordPad, what it will do, it will send the, it will send the cursor automatically to the next point. Okay, now next is, you only have to press the enter key when you want to start a new paragraph. You have to enter an, अच्छा यहाँ तक मैंने टाइप कर लिया ना. Now if I want to enter now if I want to enter write any paragraph, what I'll do, I'll start typing. I will click on the enter key and I will start typing from here. So this is how we can enter the text. This is the way we can enter the text in our document. Okay, now next is saving a document. We'll do it. Chalo, let's first of all let us yeah, first of all let us type anything. Chalo, let us type anything in our, okay. So if I want to type that, wait, now if I want to type that, when you reach the end of a line, WordPad automatically send the text. Chalo, I will type that only. Okay. So I will increase the font size to 20 or say 28. Okay, now I will type, when you reach the end of a line, WordPad automatically sends the text to the next line. Sends the text to the next line. Now you can see here that whenever, यहाँ तक मेरा
जब ये लाइन एंड हो रही थी तो मुझे एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी. व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं व्हाट इज हैपनिंग हियर, जैसे ही मैं उस लाइन के एंड पे पहुंच रही थी, वर्ड पैड ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या कर दे रहा है, सेंड कर दे रहा है. नाउ नाउ सी, अब मैं अब ऐसे ही टाइप करती जाऊंगी. ठीक है, सी नेक्स्ट इफ आई हैव टू टाइप दैट यू only have to press, you only have to press the enter. Oh, you only have to press the enter key. See, when you want to start a new paragraph, you when you want to start a new paragraph. Now kids, see, now if I want to change my paragraph from here, मैंने अब इतना तो टाइप कर लिया, मैंने इतना टाइप कर लिया. नाउ मुझे चाहिए कि भाई अब मैं नेक्स्ट लाइन करने के लिए पैराग्राफ चेंज कर दूं. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस एंटर. तो मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया. नाउ सी, मैंने एंटर प्रेस किया. नाउ हियर आई कैन टाइप, सी सपोज यहाँ पे अब मुझे यहाँ से मैंने शुरू करना है सेविंग अ डॉक्यूमेंट. मुझे यहाँ से शुरू करना है सेविंग अ डॉक्यूमेंट, जो कि क्या है, एक न्यू पैराग्राफ है. ओके, आई आई होप you understand this thing, that whenever we want to change a paragraph, what we have to do, आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ क्या करना है, चेंज कर देना है. ओके, great. Let us read ahead. Let us see how we can save our document. Okay, first, to save our document, after completion your typing, suppose I have completed my typing work. Now what I have to do, I have to, now after completion what I have to do, I have to save my work. Okay, so what are the steps, I have to click on the file tab, then what I have to do, click on save. The save as dialog box will appear. What will happen, the save as dialog box will appear on your screen. Okay, see, then what you have to do, after the save as dialog box appear on your screen, next thing you have to do is type a name for the file in the file name text box. What you have to do, you have to type a file name for the in the text box, then click on save. Then what you have to do, then you have to click on save. The WordPad save the file and the new file name appear on the title bar. WordPad save the file and the new file name appear where it will appear on the title bar of your document. It will appear on the title bar of your document. Let us see. So I am going to save this file. So this is my file. I have to save this. Let me open it in full screen. मैंने इस फुल स्क्रीन पे ओपन कर लिया. नाउ मैं फाइल पे गई. अब मुझे क्या करना है, सेव करना है. तो आई विल क्लिक ऑन सेव एज. अच्छा, सेव एज पे आई विल गो ऑन. चलो मुझे ओके फाइन. नाउ आई विल नेम दिस फाइल एज सेविंग अ डॉक्यूमेंट. ओके, मैंने इस फाइल का नाम दिया सेविंग ए डॉक्यूमेंट. व्हाट नेक्स्ट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. अब सेव ऑप्शन पे करते ही सी व्हाट हैपन, आप एक डिफरेंस देख पाओगे अपने स्क्रीन पे, दैट सेविंग करते ही यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो गया. अभी तक ये अनटाइटल्ड फाइल थी, बट नाउ इट इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट. नाउ अब इसका नाम चेंज होके व्हाट इट हैज बिकम, सेविंग अ डॉक्यूमेंट. ये क्या बन गया, सेविंग अ document. Okay, so this is how we save a document. This is the way for us to save a document. Now let us read the next point, that is update your knowledge. Now keyboard shortcut to save a document is control plus s. Keyboard shortcut to save a document is control plus s. Control plus s is keyboard shortcut to save a document.
Okay, so now the next thing that we have to do is how to open a document. We have done up to saving a document. Now the next thing that we have to do is how to open a document. Okay. Okay. To open a document that has already been saved, you have to follow these steps. So we have to follow the following step to open a document that has been already saved in our computer. So first is click on the file tab. First what you have to do, you have to click on the file tab. Now next, click on open. Click on open. The open dialog box will appear. Click on the name of the file that you want to open. Now next you have to click on the name of the file that you want to open, and then finally click on open. The file open in the WordPad window. What happened? File will get open in the WordPad window. Okay, so I'm going to open the WordPad. Okay, so this is my WordPad. Now what happened? I want to open a file. So I'll go on file. I'll go on open. Okay, so if I go on open, see, here's a list of the document that I can open. So I can choose any one of the document. So I'm going to open. Okay. So now I'm going to open this file. Let us see what happened. Now this is a file. अब ये क्या कैसी फाइल थी? This is just subtraction. यहाँ पे here is some question of subtraction जो मैम ने आपसे कराया है. Okay. Now next is what we can do. Let me increase this font size. So see, this is the way how we open a file. Also, we can open file by clicking on Control plus O. If we click on Control and then O, what happened? फिर से I can select the file. See, keyboard shortcut to open a document is Control plus O. Keyboard shortcut to open a document is Control plus O. Okay, moving ahead, next is selecting text in a document. Okay, what you have to do, you have to select a text that has been given in that document. Acha, so let me connect my laptop with internet and then I can show you something. Okay, now see. Acha, before performing any task in WordPad, you must select the text you want to work with. Suppose I want to, अब मुझे क्या करना, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, WordPad को हाईलाइट किया हुआ है. तो WordPad पे किसी डॉक्यूमेंट के में काम करने से पहले वी शुड मेक श्योर दैट व्हाट हैपन कि भाई हमारी डॉक्यूमेंट क्या हो, डॉक्यूमेंट हमारी सेलेक्टेड हो, हमारी डॉक्यूमेंट क्या हो, सेलेक्टेड हो. Before performing any task in WordPad, you must select the text you want to work with. Selected text appears highlighted on your screen. What happens? Selected text appear highlighted on your screen. Okay. Now first is select a word. First of all, what we have to do? First of all, we have to select a word. Okay. Then or double click on word to select it. What we can do? We can double click on word to select it. Or also selecting a line. To select a line, acha, first let us select a word. So here I am going to search for any paragraph. Say I am going to select, yeah, India. Okay. See. So this is the result that I have got about India, and I'm going to open Wikipedia for the same. Yeah. So here we have
Okay, now. So what happened? Let me select it. So what I am doing, I am selecting this. Okay, I am selecting this paragraph, and now I am going to paste it here in my Word document. ओके सी अब क्या हुआ यहाँ पे मैम ने क्या किया यहाँ पे मैम ने एक डॉक्यूमेंट जो कि इंडिया के बारे में उसको मैम ने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया ओके मैम ने उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया ना ना आई वांट जैसे कि हमारी बुक में लिखा था कि टू सेलेक्ट एनी वर्ड जस्ट डबल क्लिक देयर what is written there in our book to select any word what you have to do you just have to double click on that on any of the word suppose I want to select largest मुझे क्या select करना है largest select करना है what I'll do I'll go on the word and I'll push the double click अब देखो डबल क्लिक करने से क्या हो जा रहा है ये हाईलाइटेड हो जा रहा है ना now if I want to make it bold I can make it bold if I want to make it italic I can make it italic if I can underline it I can underline it See, now, so this is how we select a word. Or say, see, just you have to double click on any of the word and that word will get selected. What happened? That word will get selected. Okay. Let us move ahead. Okay, next is selecting a line. Next we have to do is selecting a line. Now, single click on the white space to the left of a line. See, this is the line and this is the left of the line. So, what I have to do, I just have to put the single click. Chalo, if I want to select a line, let us try. So, this is the left of the line and if I click on single click, see, this line gets selected. ये line क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई सेलेक्टेड हो गई व्हाट हैपन ये लाइन क्या हो गई बेटा ये लाइन सेलेक्ट हो गई जस्ट बाय डबल क्लिकिंग और जस्ट बाय सिंगल क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन ओके नाउ इफ आई वांट टू सेलेक्ट दिस लाइन जस्ट आई हैव टू क्लिक देयर अच्छा अब जैसे मैंने ये लाइन को क्या किया मैंने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया नाउ आई कैन change I can make it bold I can make it underline I can make it italic I can do whatever I want with this line okay now moving back to our chapter moving back to our PDF say now next thing is selecting a paragraph next is selecting a paragraph triple click on paragraph to select it what we have to do we have to triple click okay let us see whether we can select it or not so see this is the whole paragraph and if I do this like this see मैंने क्या किया मैं ये पूरा मैम ने एक पैराग्राफ सी मैम ने क्या किया था मैम ने ये पूरा पैराग्राफ कॉपी किया था सो मैम वांट्स कि भाई ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए तो व्हाट आई हैव टू डू आई विल डू द ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ जस्ट डू द ट्रिपल क्लिक अब देखो ये पूरा पैराग्राफ क्या हो गया सेलेक्ट हो गया देखा like this we can bold it we can make it italic or we can underline it we can change the font size we can change the font style okay I will keep it like this see कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना okay now so this is how we select a line a word and a paragraph now next is long selection now suppose अब मुझे एक पैराग्राफ नहीं सेलेक्ट करना मुझे सपोज इधर ड्रैग से लेके डी तक सेलेक्ट करना है सो व्हाट आई हैव टू डू आई हैव टू ड्रैग माय मुझे क्या करना होगा अपना माउस को ड्रैग करना होगा आई हैव टू ड्रैग माय माउस ओके सो व्हाट आई हैव टू डू आई हैव टू ड्रैग द माउस until the highlight until we get the highlighted text let us do सी अब देखो इस तरह से मैंने ड्रैग किया और मुझे क्या हुआ यहाँ तक मिल गया so kids this is it for today and now we will meet in our next class